ठीक है. So now let us talk about the hormones. So what are hormones? ठीक है बेटे. So what are hormones actually? These are the chemical substance. जैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिस्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं एंड विच हेल्प इन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे हमने रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तभी भी हमने बात करी. यस, एज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द केमिकल्स. यस, ठीक है. सो द हॉर्मोन्स आर नेचुरली अ केमिकल सब्सटेंस जो हमारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं. We can reproduce because of these. The sebaceous glands are active. We can sweat. The oil glands are active. We can sweat glands के कारण sweating होती है. Oil gland के कारण, that is sebaceous gland के कारण oil आता है. So there are different kind of glands because of which the different activities are being regulated. If these had not been present, the activity will not be regulated. Any chemical reaction take place in our body. Yes. ठीक है. So there are certain enzyme also, there are certain hormones also. Because of these hormones, the activities are regulated. ठीक है बेटे. So you can write the definition to write down the hormones are the chemical substance which contribute or which coordinate the activities of living organisms and certainly their growth. And we already have studied beta in male. There is a testosterone. In the female, there are estrogen and progesterone. These are the sex hormone when the chapter is being studied. Okay. Now, how this the hormones are created? From where, what type of organs are there in our body? From where the hormones are created? These are the glands. Okay. The glands help in the secretion of the hormones. ठीक, वहां से आपके hormones secrete होते हैं बेटे. And these glands are actually two type. One is exocrine and one is endocrine. ठीक है. So there are two type of glands from where the secretion occurs. These hormones are being secreted by glands. One is known as beta exocrine and other is endocrine. So what is the difference between exocrine and endocrine? ठीक है. जो exocrine glands हैं, they secrete with the help of ducts. They have ducts to secrete. ठीक है. जो endocrine gland है, उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली स्ट्रीम के ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देनी है और डक्ट के बिना डालनी है. तो हम कहेंगे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो दे हैव डक्ट्स. ठीक है बेटे. जो एंडोक्राइन, एंडो, दे आर डक्टलेस. You don't have to learn this always, just understand the concept. So they have duct. Okay. For the exocrine, you can write the example like your digestive system. The digestive glands जो होते हैं digestive system में, वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये जूसेस सिक्रीट करते हैं, वो एक डक्ट में सिक्रीट करते हैं. These are exocrine. हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे वो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी बेटे एक्सोक्राइन है.
I'll tell you the why hormone important बेटे. Hormone now ना हमारी body में कितनी activities ना हो सके, जैसे कि अगर pituitary glands हमारे the master glands होते हैं वो बाकी glands को regulate ना करें, there will be no secretion of testosterone, estrogen and progesterone और भी जो glands हैं they will not be active. They will not secrete. आपकी जो एंजाइटी है will study the function of the glands. अब देखोगे एंजाइटी मैनेज ही ना हो जाए, एकदम से आपका मूड अपलिफ्टमेंट होती है या आपको गुस्सा आता है, ये सब ग्लैंड्स की हार्मोनल चेंज के कारण आता है. यस मानसवी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैं आपने ये दो ग्लैंड कौन से लिखे हैं, हम दिख नहीं रहा, हम बोर्ड क्लियर नहीं है. Endocrine and exocrine. Endocrine is which secrete their secretion in the bloodstream. They don't need any duct. ठीक है? And एंडोक्राइन. endocrine. These are ductless. And exocrine जो होते हैं उनमें ducts होती हैं बेटे. They secrete the secretion in the duct itself. Okay? मैम ओके. Okay, Jabji, it's clear to you? Okay. So we'll do further. The function you will do, you will know the importance of the hormones. ठीक है? तो जैसे हम आगे पैनक्रियास करेंगे, सॉरी पिट्यूटरी करोगे, यू विल डू एंड्रोलिन ग्लैंड्स एंड ऑल. ये सारे बेटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन सिर्फ डक्ट्स जो टारगेट ऑर्गन है या टारगेट साइट है वहां तक पहुंचा देते हैं. ठीक है? तो मींस ग्लैंड्स ऐसी चीज, ऐसे ऑर्गन या ऐसे टिश्यू या कुछ भी है जो जो सिक्रीशन है आपकी, जो हॉर्मोन्स है, दे आर डायरेक्टली move towards the target organ. One is endocrine. वो क्या करते हैं? They don't have any duct. They will release hormone directly into the bloodstream. And this hormone we can say will carry the message. ठीक है? कि आपने अब ये करना है, अब आपने ये स्क्रीट करना है, अब आपने स्वेट ग्लैंड को कहते हैं भी आप स्वेट रिलीज करो. कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी they will control your dwarfism or जो आपने you have to become your height is being controlled by some of the glands. तो ये जो है मैसेज लेके जाते हैं कि अब हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, what our body should do. ठीक है? तो this is conveyed by the hormones, and the hormones are being secreted by two type of gland. One is exo and other one is endo. The students are coming too late. ठीक है? Now let us see the main gland which is concerned in this chapter. You know, we are doing the reaching the age of adolescence. ठीक है? So there are certain glands which help in the production of the sex hormone, that is a pituitary gland. ठीक है? This is a master gland, that is a pituitary gland. एक तो बच्चे टाइम पे नहीं आते हैं. ठीक है? So बेटे now it is a pituitary gland. What does pituitary gland does? पहले आप समझो इसको. ठीक है? Pituitary gland एक हार्मोन स्क्रीट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरीज को मैसेज कन्वे करता है कि they should stimulate the growth of the male sex hormone and the female sex hormone. The male sex hormone, you know that it is a testosterone, and the female sex hormone, that is estrogen, and the second one is progesterone. ठीक है? अब ये pituitary gland will secrete LH. Now what is LH? LH की फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है?
that is luteinizing hormone. Okay, this luteinizing hormone then stimulates the testes and ovary to secrete the sex hormones. Okay, that is testosterone and estrogen. Why is silent from here? It will secrete bete, it will stimulate the testosterone and estrogen in the male and female. Okay, and this is a ductless gland which will secrete its hormone in the bloodstream itself. Okay, this secrete the secretion in the bloodstream itself and thus help in the release of testosterone and estrogen. And you know that between testosterone and estrogen, both of these hormones help in the to make the changes during the puberty. Okay, and now these hormones will change, make the change in the body during the puberty. जब adolescence होती है तो ये जो दोनों हार्मोन जब secrete हो जाते हैं तो there is the changes, these both hormones we have already done will help in highlighting to make the changes during puberty. Okay, and we know that this gland is ductless gland. Ductless gland which will secrete the secretion, that is this hormone, where in the bloodstream only, in the blood stream only, not in the duct. It will not release in the duct, it will release in the bloodstream. Bloodstream में क्या release करेगा? Luteinizing hormone. Luteinizing hormone कहाँ जाएगा बेटे? Ovaries and testes पे. वो क्या करेंगे? They will secrete testosterone and estrogen. जब testosterone और estrogen आएंगे, and this hormone will certainly bring changes in the body on the onset of puberty. Got the point? Yes or no? Okay. Yes, Rhythm. Yes, Rhythm. You are unmuted. Rhythm. मैम एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से समझा दोगे? बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड एक ना मास्टर ग्लैंड होता है बॉडी में, ठीक है, हमारी ब्रेन में लोकेटेड होता है. विल डू फर्दर आल्सो. उसने क्या करना है, जब आपकी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है तो दिस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय वी कैन से गॉड, है ना, एंड ही नो बेटर कि नाउ आवर बॉडी नीड्स अ चेंज, है ना. So this gland will release a hormone that is a luteinizing hormone. Now this luteinizing hormone will actually, how it will secrete this luteinized hormone? It will release this luteinized hormone in the bloodstream. And this system, whole of the system in our body is already made, है ना. So this luteinizing hormone which will reach to the reproductive organ. The reproductive organ in the male is testes and the female is, we know that is ovary. And this luteinizing hormone will certainly convey some kind of message to secrete the sex hormone, that is testosterone and egesterone. Now, when this testosterone and egesterone is secreted, there are the changes which occur on the onset of puberty. Changes we have already studied, the broadening of
chest or beard and all the changes which occur in female and male, this is caused by this hormone, and this hormone is under the control of the other gland, that is pituitary gland, and this gland secrete a luteinizing hormone which help in the secretion of these two hormones. Okay bete, done? Yes, Rhythm. So now let us talk about other hormones also. So certain hormones are there. These are called, and these are secreted by endocrine glands only. Okay. So let us do certain more of that kind. So pituitary से start करते हैं. Let us start with the pituitary itself. Now you will write location, which kind of hormone they is secreted, and what is the function of the hormone. ठीक है, तो let us start. The first gland which is located in the brain. Gland located near the brain. Okay, this is the first located near the brain, or you can write at the base of the brain. Now this gland is actually बेटे master gland. ठीक है, एक तो luteinizing hormone किया, उसके अलावा it will secrete the growth hormone. Now growth hormone से हमें पता चलता है बेटे कि ये जो है हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेगा. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स या बोन्स बनती है, तो इट विल सी थ्रू डेथ. ठीक है, तो आप हिंट लिख सकते हो, एज इट द नेम सजेस्ट, इट हेल्प इन द ग्रोथ रेगुलेशन. ठीक है, अच्छा, अगर हम ये हार्मोन लेस क्रिएट कर हो जाए तो देयर अकर द डवार्फिज्म. ठीक है, हाइट छोटी रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड डवार्फिज्म. ठीक है, if this hormone is secreted less, you can write, if the hormone is secreted less, then the person will become dwarf, and dwarfism will occur, that is. ठीक है, and if it is secreted more, then ganglianism is occur, then the person will become log like khali you have seen. तो वो किसके कारण होता है? when this hormone is secreted in the excess. डिफार्मिज्म हो जाता है जब हार्मोन एक्सेस में होता है बेटे, और डिफार्मिज्म हो जाएगा जब हार्मोन क्या हो जाएगा, इधर सिक्रीशन इज लेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज आफ्टर द पिट्यूटरी ग्लैंड. होप यू हैव रिटन. आई एम राइटिंग द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज अ थायराइड ग्लैंड. This gland is located in neck region below larynx. It is located in neck below larynx. As the name suggests by the gland, thyroid, ये हार्मोन सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन. नेम ही बता रहा है बेटे आपको, द हार्मोन सिक्रीटिंग इज थायरॉक्सिन.
ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है बेटे, अगर आपने एक ग्वाइटर डिजीज भी सुनी होगी, तो ये जो ग्लैंड है ना, एक्चुअली आपकी ऑक्सीडेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट की। ठीक है। अगर ये ग्लैंड थायरॉक्सिन कम रिलीज करता है तो हमारी जो बॉडी में, जो ये थ्रोट में एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं ग्वाइटर। अब इस थायरॉक्सिन की भी रिलीज होने के लिए हमें चाहिए आयोडीन हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन कम होती है तो कम थायरॉक्सिन रिलीज होता है और पर्सन विल सफर फ्रॉम द ग्वाइटर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं थायराइड हो गया। तो हमें अब आ रहा है आजकल, देयर आर आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द मार्केट। ठीक है। जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी तो ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी मिलेगी। अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी। अब इस भी हार्मोन को ज्यादा रिलीज करवाने के लिए हमारी बॉडी में किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन नहीं होगी so there will be no cellular oxidation because there will be no release of the, or some less release of this hormone. Okay, so you can write down, it stimulates the growth of the cellular oxidation of fats, carbohydrates, and proteins, and iodine is necessary for the secretion of thyroxine. Less secretion of thyroxine result in goiter. Okay, it will result in goiter bete if there is less secretion of the thyroxine is there. So iodine, you should eat a iodized diet. Got it? Now next gland is adrenal gland, and there are pair of adrenal gland, okay, present on the top of each kidney. Present on the top of each kidney. Adrenal gland. These are in the pair, a pair of gland are there, and they are present on the top of each kidney. Okay, they are present at the top of each kidney. Now the two hormones that are released by these glands are adrenaline and aldosterone. Okay, adrenaline and aldosterone. Now, what is the function of this gland? ये जो आपको गुस्सा आता है, या आपको एकदम से आप खुश हो जाते हो, या आपको कोई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी हो जाता है, हार्ट बीट हो जाती है, तो ये सब कुछ हमारे यही ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है। अगर ये एकदम से ये हार्मोन्स रिलीज करना ना, मतलब एकदम से अगर रिलीज ना हो तो बंदे को एकदम से हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बेटे ये यही ग्लैंड है, सब कुछ ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यू कैन राइट डाउन, इट कैन कंट्रोल द इमोशंस। इमोशंस में सारी इमोशन है, आपकी एंगर की, आपकी हेट्रेड की है। ठीक है, इट इज रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, लाइक हाउ इट कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। जब हमें
गुस्सा आता है तो एकदम से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, तो ये भी यही बढ़ाता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। तो हमारा हार्ट बीट गेट इंक्रीज्ड, हम भाग हमें डर लगता है तब भी हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो इट विल रेगुलेट, इट इज रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। अगर इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाए तो डिजीज नोन एज एडिसन्स डिजीज हो जाती है, यू कैन राइट डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल emotions like fear and anger, okay, blood pressure, and heartbeat also. Okay, so these are the various things which these glands control, and also regulate the mineral balance in our body, and hyposecretion causes Addison disease. बेटे विच हार्मोन, दैट इज एंड्रोलिन, जो है बेटे आपका फियर एंगर करता है कंट्रोल। एंड्रोलिन जो है आपका हार्मोन दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द फियर एंड एंगर। ओके बेटे, ठीक है। लेस देन 2 minutes आर रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल टेक, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन, रेगुलेट mineral balance and hyposecretion result in the disease known as Addison. Visible to you. Okay, should be visible. Write down, then we'll discuss the next one. Okay. Hurry up. Two of the hands are raised. How sperms and other hormones are related to our body? Bete, if the hormone secretion is there, na, so it will regulate the sperms. ठीक है, हाँ जी। Two more doubts are there. Yes, बेटे. मैम ये एड्रेनालाइन एंड एल्डोस्टेरोन क्या है? हाँ, तो एंड्रेलिन जो हार्मोन है ना बेटे, वो आपकी इमोशंस वगैरह कंट्रोल करता है, जो भी एंगर एंड ऑन है। जो आपकी एल्डोस्टेरोन है वो आपकी जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है बॉडी में, वो उसको रेगुलेट करता है। अगर आपकी सोडियम पोटेशियम बैलेंस ना हो तो आपको एडिसन डिजीज हो जाती है। हाँ जी मानसवी, यू आर ऑल्सो unmuted, you can say anything you want to say. मैम Repeat it. मैम सेकंड ग्लैंड कौन सा है? मैम पढ़ा नहीं जा रहा। Aldosterone.
It is not a gland, hormone, aldo, ALDO. Hormone, yes. Sterone, STERONE, aldosterone. मैम जो ब्लड प्रेशर है वो कौन सा हार्मोन करता है ब्लड कंट्रोल? प्रेशर इज बेटे एंड्रेलिन करता है. ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय एंड्रेलिन हार्मोन, एंड जो आपकी मिनरल बैलेंस है वो दिस इज डन बाय एल्डोस्टेरोन. ठीक है. नो डाउट अगर आपका ब्लड सोडियम पोटेशियम पंप रेगुलेट नहीं होगा ना, तो बेटे ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट नहीं होगा. तो आप बोथ द वे दोनों हार्मोन ही मतलब हम कह सकते हैं कि रेगुलेट करते हैं. क्योंकि जब ब्लड सोडियम पोटेशियम पंप ही रेगुलेट नहीं करे, मिनरल बैलेंस क्या है बेटे, ये पंप चलता है हमारी बॉडी में, तभी तो हमारी बॉडी में एक्सचेंज होती है सब चीजों की. हाइपो का मतलब होता है बेटे जब हम किसी चीज की लेस सिक्रीशन करते हैं, और जब ज्यादा सिक्रीशन होती है तो हम कहते हैं जो एक्सेस होते हैं हाइपर हो जाता है. हाइपर जैसे हाइपर ब्लड प्रेशर, एंड हाइपो होता है लो ब्लड प्रेशर. हाइपो सिक्रीशन बेटे, हाइपो लिखा है मैंने, हाइपो सिक्रीशन लीड्स टू. ओके जब जी, इट इज नॉट एस, दिस इज HYPO. मैम जो रेगुलेट मिनरल बैलेंस है ये आपके उसके ये कौन सी डिसीज कॉज करता है अगर ये लेस प्रोड्यूस हो? हाँ, तो हाइपो सिक्रीशन हो तो बेटे एडिसन डिजीज होती है. ओके. ठीक है. आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर वगैरह रेगुलेट नहीं हो पाता, तो बैलेंस खराब हो जाता है. ठीक है. ओके. हाँ जी, एनी डाउट एनीवन? ठीक है. तो हमने अभी आज मैंने था कि मैं 4 ग्लैंड जो है वो करवा दूं आपको, मगर हुए नहीं है. अब हमें एक ग्लैंड रह गया, पैनक्रियाज, विल सी ऑन मंडे, ऑन थर्सडे.